Welcome to Shalini's classes. So today's our topic is how to improve your fluency, how to improve your English. I'm just giving the 5 tricks to improve your fluency. In this video, you can find out the 5 basic tricks. Through these tricks, you can be able to speak like a native speaker. So start this video. If you are new in this channel, so please subscribe my channel and like my channel and share with your friends. So start this video from the 5 tricks. In this video, don't skip, you just learn 5 tricks how to improve your fluency like a native speaker. So start this video. So first trick is that think in English. Don't translate the English in your mind and after that you will convert Hindi sentence into the English. You just think in English. If you think in English, then you speak in English. You are saying that what is the big deal in it? Think in English. How can we think? We are not able to speak English. Then how can we think? Simply I am giving the answer. Small sentences आप कंस्ट्रक्ट करिए पर इंग्लिश में कंस्ट्रक्ट करिए. कंस्ट्रक्ट जब आप इंग्लिश में करेंगे तो यू हैव द लॉट्स ऑफ वोकैबुलरी इन योर माइंड. बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं और जो हमारा जो माइंड होता है वो इमेजेस के थ्रू उस चीज़ को कैप्चर कर लेता है. तो जब इफ़ वी हैव अ गुड इमेज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग इन आवर माइंड, ऑलरेडी हमारे पास है वो इमेज, तो हम उसको इंग्लिश में सोचेंगे और इंग्लिश में ही बोलेंगे. तो फर्स्ट ट्रिक जो होती है वो होती है थिंक इन इंग्लिश. थिंक इन इंग्लिश मीन्स सोचो ही इंग्लिश में. इफ आर नॉट एबल टू थिंक इन इंग्लिश तो आप फर्स्टली उसको सर्च करिए कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं. तो आप उसको रिमेम्बराइज ऐसे ही करिए कि हम उसको ऐसे ही याद करेंगे. हमें नहीं पता कि पर्दा होता है, इसको हम कर्टन बोलेंगे. कर्टन मीन्स कर्टन. हमको इसको कर्टन मीन्स पर्दा याद नहीं करना है. मीन्स हमको याद करना है जस्ट लाइक एप्पल. एप्पल मीन्स सेब. हम बेसिकली बच्चों को पढ़ाते हैं एप्पल्स मीन्स सेब. नहीं, हमको जब हम फर्स्ट ट्रिक की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको जो फर्स्ट ट्रिक का हमारा जो बेसिक मेन जो मोटो है वो ये है कि थिंक इन इंग्लिश. एप्पल मीन्स एप्पल. एप्पल मीन्स सेब याद नहीं रखना है आपको. बस फर्स्ट ट्रिक हमारी इतनी सी ये कह रही है, सिंपली अंडरस्टैंड करिए कि एप्पल मीन्स एप्पल. दैट्स इट. सेकेंड ट्रिक्स है हमारी प्रैक्टिसिंग स्पीकिंग लाउडली. जो भी सेंटेंसेस आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट एनी सेंटेंसेस इन योर माइंड, जस्ट लाइक यू आर यूजिंग वेरी स्मॉल सेंटेंसेस, you are constructing a very long sentences, whatever, you have to convert. Firstly, loudly you will speak out in front of mirror and you just speak out loudly. If you are speaking loudly that particular vocab or that particular word, then you memorize these words. If you are memorizing the word, this is not a math, this is not a formula, this is a language. So if you are working on a language, really want to be a native speaker, then you have to work on the basic thing of the language. The thing is that you are not you never memorize the things, you have to understanding the things. जो थर्ड ट्रिक है हमारी वो है don't learn the words, instead you are using phrases. फ्रेजल वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं. उनसे क्या होगा कि आपको वोकैबुलरी के साथ में वोकैबुलरी जो है अब उनकी जगह पे फिलहाल जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको उस वोकैबुलरी की जगह यूज करना है फ्रेजेस वर्ड्स जो होते हैं. मैंने बहुत सारे फ्रेजेस वर्ड हमारे शॉर्ट्स वीडियोस में डाल रखे हैं, आप उसमें जाके चेक इट आउट कर सकते हैं. आप वोकैबुलरी के साथ साथ उसको इंस्टेड ऑफ वोकैबुलरी यू आर यूजिंग फ्रेजेस. तो it is more convenient to speak English and you get your goal. So third is that you stop using the vocabulary, instead you are using phrasal verbs. Second thing is that stop memorize the words, you just understanding the word. For example, I am saying that used to हमें पता है used to कहाँ पे यूज होता है, हमारी पास्ट हैबिट्स के लिए जो हम करते थे बट अभी स्टिल हम नहीं करते हैं. तो हमें पता है कि used to का मतलब ये होता है. बट we are memorize these words, but how can we understanding what is the actual scenario in our life comes and I will use this particular word. So we have to take another examples of taking these words. So in all, the second trick is that we don't have to memorize the word, we have to understanding the word. If you are using a phrasal verbs,
just like used to, any other verb you are using. So you are using in the different context. If you are using in the different context, then you will get it know how we can use this phrasal verb. For example, if you are using you are taking the one scenario and then you will using that particular phrasal verb, then you are create a different scenario from the same phrasal verb you can use. Then you will find out that one fine day, you will get it down that in this scenario I can use this phrasal verb like this, and that scenario I will using phrasal verb like that. So in this different context you are using the phrasal verb, then you will get it over that you are able to know how to use the phrasal verb in a different context. So this is the basic mean of using phrasal verb instead of vocabulary. The fourth trick is that record yourself. Record yourself means firstly you are able to speak English very small, starting from the very small sentences, just like 4 to 5 sentences you are able to create. Then you just record yourself. After recording, you just listening very carefully. Then you will find out your mistakes. That is the main motto, is that you find out your mistake, you find out your pronunciation mistakes, you find out your pauses. So where you are feeling getting nervous, that at that time I just feel nervous, then you are using which types of word I can use in that particular scenario. So for the basic motto of the recording yourself is that how to find out your mistakes. Okay, so guys, you just record yourself and you just listening very carefully and you find out your mistake. And the fifth trick is that listen more you study. Listen more you study means listening more and more. ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करिए. लिसन मोर यू स्टडी. जब हम पढ़ते हैं किसी चीज़ को तो हम उसको मेमोराइज कर रहे हैं. वी आर नॉट एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग. सो फर्स्टली यू आर जस्ट लिसनिंग एनी पॉडकास्ट, एनी गुड म्यूजिक, इंग्लिश सॉन्ग्स. इफ यू आर वर्किंग ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज, देन यू हैव टू बी लिसन इंग्लिश सॉन्ग एंड यू विल रिपीट एंड रिपीट. जब आप एक गाने को 2 बार सुनते हैं, 3 बार सुनते हैं, यू हैव टू बी कैच अप many of the words of this song. तो listen more, listen to study. अब ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना, आपको समझना ऑलरेडी आता है, but you are not able to speak. So basic thing is that more you listen. अगर आपकी listening skills अच्छी होगी, then you have to be able to speak in front of anyone, just because you have a very good phrases verb you have in your mind and you have a very good memory and you are understanding what is or what he or she is saying, then you are able to express your feelings in front of anyone. So the basic trick is that you are listening more and more, so nobody will judge you. सबसे ज़्यादा जो हमें डर होता है वो ये होता है कि जब भी हम किसी के सामने इंग्लिश बोलेंगे तो वो क्या समझेगा, हमने अगर गलत बोल दी तो वो क्या समझेगा, व्हाट इज द इम्पैक्ट. सो डोंट अफ्रेड फ्रॉम दैट. यू जस्ट लिसनिंग, you just record yourself and you just identify your mistake from your sides. So there is no fear about that particular scenario. So just hope you are doing well. So good luck for this video. And so through these tricks, guys, you can get definitely very good results